Okay, so today we are going to talk about Riemann sphere and the uh, also the Riemann hypothesis. Okay, first of all, let me uh, give you an introduction to the problem. So basically, the Clay Institute of Mathematics uh, has formulated 7 problems in mathematics, and which they have uh, given a price of $1 million, and any person who solves this gets the honor and the prize money also. And okay, these are the 7 problems which have not been solved yet. Okay, so one of the problem out of these 7 is Riemann hypothesis. Okay, so let's study. ओके, तो स्टार्टिंग में हम रैमन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड देन विल गो टू रैमन स्फीयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एस जीटा फंक्शन इज ज़ीरो. ओके, दिस इज द $1 million प्रॉब्लम. तो आई थिंक 18 समथिंग 1850s में आई थिंक रैमन ने पेपर पब्लिश किया था अबाउट दिस हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस इज बेसिकली उसने कंसेप्ट लाइक प्रपोज किया कि ये कंसेप्ट एक है एंड दिस होल्ड्स ट्रू, बट इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है. वी डोंट नो हाउ व्हाई दिस इज सो. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज टू सॉल्व दैट व्हाई, टू आंसर दैट व्हाई, कि व्हाई दिस इज सो. ओके, सो जीटा फंक्शन पहले हम बात करेंगे. जीटा फंक्शन क्या है. जीटा फंक्शन ऑफ एस इज डिफाइंड एज 1/1/s प्लस 1/2/s प्लस 1/3/s प्लस 1/4/s एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. ओके, so this is the zeta function where s can be any positive integer. Okay, so let's say if we put 2 in this equation, in the function, and we solve this 2 for infinite values, will this series would converge. Converge means that the solution, like this sequence, or whatever, this sequence जो बेसिकली सीक्वेंस है वो आपको 1/4/s है प्लस 1/5/s एंड सो ऑन चलता रहता है इन्फिनिटी तक. तो एंड इफ़ यू सॉल्व दिस होल सीरीज, कन्वर्ज का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा. इट वोंट बी इन्फिनाइट, इट वोंट बी अनडिफाइंड, इट वोंट बी माइनस इन्फिनिटी, इट विल अप्रोच अ सर्टेन वैल्यू. In this case it would be pi² by 6. Okay, now let's put -1. Although zeta function was initially defined for the positive integers only, but let's put -1. We get like 1/1/-1, 1/2/-1, 1/3/-1, and if we simplify this like 1 by individual terms, we'll get 1 plus 2 plus 3 and so on, which we obviously know is the sum of all natural numbers. And if this goes off for infinity, then it comes out to be -1/12. Although if we look at this, like this sum of all natural number, intuitively it makes sense to say that it is not converging, which means that the sum of all the natural number is not defined. It's not a certain, it does not approach any certain value, rather it goes to infinity. But as Ramanujan suggested, and later was also proved, that sum of all the natural numbers is in fact not infinity, but it approaches, or exactly it is 1 minus 1/12. Okay, this itself is a different problem, like why the sum of natural number is -1/12, which was solved much later than after the Ramanujan first introduced it. Like Ramanujan just gave the solution, like, but he didn't know why. But all he knew was that it is equal to -1/12, but not why. It was proved later after he died, like many years later. Okay, so अब हम बात करेंगे let's अब यहाँ पे रायमन का क्या काम आता है. रायमन का काम आता है कि he extended this
these values of s, not just he said it cannot be just integers, but it can be any number, and not only real number but it can also be imaginary number. तो उसने क्या किया, उसने इस एस में नंबर्स दिए, मतलब इमेजिनरी नंबर्स को भी इंक्लूड किया. सो यहाँ हमारे पास हमने एक्स पे रियल नंबर्स लिए हैं एंड देन वाई में इमेजिनरी नंबर्स लिए हैं. ओके, सो जब उसने कुछ चीज़ें कंक्लूड की, लाइक जो एस इक्वल टू 1 है उससे आगे जितने भी नंबर्स हैं इस प्लेन में, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जितने भी नंबर्स विच लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एस इक्वल्स टू 1 विल कन्वर्ज. ठीक है, जितने आप इनमें से कोई भी नंबर पिक कर लो, इट कैन बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, लाइक it can have a negative of imaginary part, and in the positive in the real part it can have any number greater than 1. It does not include 1, it includes only greater than 1 ना. like real number, as long as real number में आप s की वैल्यू, जो रियल पार्ट है ऑफ s की वैल्यू is greater than 1, the whole series would converge. So this all shaded area is converging, so it holds true, like not true but like it would converge. ठीक है, like as said here, all complex number with real part is greater than 1 converges. Okay, so but s equal to 1 पे अगर हम s 1 पुट करते हैं इस जीटा फंक्शन में, देन वैल्यू उसकी 1, देन जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड रहती है, लाइक वो कन्वर्ज नहीं करती है. ठीक है, एट s इक्वल टू 1, सो इट इज़ अ स्पेशल. आप कोई भी नंबर ले लो इस लाइन पे, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका रियल पार्ट 1 है एंड इमेजिनरी पार्ट कुछ भी है, वो कन्वर्ज नहीं करेगा. ठीक है, जीटा फंक्शन में. ओके, और सो इसको हम बोलते हैं पोल और सिंगुलैरिटी ना. एंड ठीक है, अब जो ये डोमेन है ना, मतलब इस प्रॉब्लम का कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन है, एंड हम ये जो फंक्शन है जीटा फंक्शन, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं, तो ये डोमेन में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हॉलोनोमिक फंक्शंस. ठीक है, सो बेसिकली हॉलोनोमिक फंक्शन में क्या है कि आप उसमें इमेजिनरी पार्ट भी डाल सकते हो, एंड एक आप उसको कुछ सर्टन चेंजेस करके आप जो उसकी डोमेन है फंक्शन की वो इंक्रीज कर सकते हो. लाइक ओरिजिनली अभी हमने बोला कि सिर्फ इतना डिफाइंड था, बट रायमन ने जो अपना पेपर लिखा उसमें इसने इसी मेथड को यूज़ करके उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे इसकी डोमेन इंक्रीज करनी है. उसने ये डिफाइन कर दिया कि ये इससे पीछे जो नेगेटिव है ना उनके लिए भी वैलिड है. लाइक आप -1 भी पुट कर सकते हो, -2 भी कर सकते हो, मतलब एनी नंबर जो 1 नहीं है उन सब के लिए आप जीटा फंक्शन को वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है, वो सब के लिए डिफाइंड आएगा. ठीक है, लाइक कन्वर्ज करेगा. ठीक है, तो एक्सटेंडेड द डोमेन ऑफ द डोमेन ना इन रायमन पेपर हो गया. एंड ओके, सो इसका मतलब कि आप -1 पुट करोगे ना, आप -1 कॉमा आयोटा पुट करो, आप चाहे -1 कॉमा माइनस आयोटा पुट करो, नॉट कॉमा सॉरी, -1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, कुछ भी पुट करो तो उनके लिए भी डिफाइंड हो जाएगा ये फंक्शन. ठीक है, सो अब एक जो अब हम वापस आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन हमारा ये था कि कहाँ पे जीटा की फंक्शन वैल्यू, जीटा फंक्शन की वैल्यू 0 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एस उसकी वैल्यू 0 है. दैट इज़ द क्वेश्चन ना. अब हमें कुछ ऑब्वियस जीरोज हैं, लाइक जीरो ऑफ -2 भी 0 होता है ना, प्योर -2, लाइक ठीक है, जिसमें सिर्फ रियल नंबर पार्ट है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है. सो जीरो ऑफ -2 इज 0, जीरो ऑफ -4 इज ऑल्सो 0, जीरो ऑफ -6 इज 0, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द नेगेटिव इवन इंटीजर्स है ना, उन सब के लिए जीटा फंक्शन की वैल्यू 0 है. दीज आर द ऑब्वियस 0. ठीक है, सो दे आर नॉन ट्रिवियल, they don't hold any importance. And another the main concept which Riemann gave is this critical strip which lies from x equals to 0 to x equals to 1.
all the numbers which lie in this critical strip, there's of certain importance, and there is middle line, like the middle line in this strip, which is x equals to 1 by 2, which is half, is known as critical line. Okay, so what Riemann, actually the Riemann hypothesis says that all the numbers, all the zeros, like all the zeros of the function, like all the values of h for which this zeta function is 0, lies on this line. It's only, this is the hypothesis which Riemann gave. That's why it's called critical line. And these zeros are also non-trivial, like they do not hold any importance. Okay, so they do not hold any importance. But also he stated that all zeros, which all the zeros of this zeta function has to lie within this critical area. There cannot exist any zero of for this function, like there cannot exist any value, like there cannot exist any value of s for which zeta function is 0, such that this s does not lie in this critical step. ठीक है, मतलब कोई मतलब इस क्रिटिकल स्टेप के बाहर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे जीटा फंक्शन की वैल्यू 0। एंड इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि इस क्रिटिकल स्टेप के अंदर हैज़ टू बी देयर सर्टन वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच दिस जीटा फंक्शन इज 0। ठीक है, एंड ऑलरेडी ही टोल्ड दैट दिस इज अ क्रिटिकल, एंड यहाँ पे जीरोस ऑलरेडी हैं विच आर नॉन ट्रिवियल। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किए हैं जीरोस, है ना, लाइक मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं, मतलब बहुत से जीरोस, ट्रिलियंस ऑफ जीरोस इस क्रिटिकल लाइन में उन्होंने फाइंड किया, विच इज़ ओके। बट द मेन पॉइंट इज एनीवन who proves that there exists a zero in this critical step and not on this line, like this in this shaded area, but not on this line, like he solves the Riemann hypothesis. And anyone who like solves it or disproves it, like wins this problem. Okay, so basically this is the hypothesis. And why it is important, इसकी importance ये क्यों है कि अगर हमें पता चल जाता है कि इसके जीरोस और कहाँ पे लाई करते हैं, तो उससे हम उससे क्या बता सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम उससे बता सकते हैं कि हमारी जो प्राइम नंबर्स है ना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, सो अगर ये रायमन हाइपोथेसिस सॉल्व होता है तो हम प्राइम नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, लाइक विच आर टोटली नॉट वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। लाइक यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है, यहाँ से प्राइम नंबर आगे, दिस इज डिफरेंट डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज डिफरेंट डोमेन, बट दे आर समहाउ वेरी मच इंटरलिंक्ड ना। तो इससे हम प्राइम नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दीज आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इसकी नॉट ओनली लाइक थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हाउ द प्राइम नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, so this is basically the Riemann hypothesis. And now let's talk about the Riemann sphere. It's a different thing, like it's a different thing out of that's not very much related to this Riemann hypothesis. Okay, so Riemann sphere. Okay, let's imagine a complex plane. ठीक है, एक complex plane है like this. Okay, where एक axis में real numbers हैं, and then on the perpendicular axis there are imaginary numbers. Okay, so basically Riemann sphere और कुछ नहीं है, is a way to represent this complex plane which extends to infinity in a finite volume. ठीक है, ये क्योंकि infinity के लिए तक extend करता है complex plane, उसको finite वॉल्यूम में कंटेंट वॉल्यूम में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं Riemann sphere, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैप आउट द वर्ल्ड ना, लाइक आवर वर्ल्ड इज स्फीयर ना, अर्थ इज अ स्फीयर, एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ अ मैप of the land mass and the seas, all the surface of the earth, we have to develop certain techniques. Like normal like map which we see like this is a rectangular, but the stereographic projection is a circular map. So you might have seen this map somewhere, but it's a different way to project a sphere surface on a 2D surface. Okay, so this is that method. Let's imagine we'll talk about this method now.
let's imagine this is a complex plane, and there is a sphere which passes through this complex plane. Okay, like not exactly passes, but it cuts through this spherical. Cuts through this plane. Okay, such that its equator lies on this plane. Okay, so इसका जो equator है इस sphere का उस line इस plane पे lie करता है. Now let's take any point on this plane and extend the line and join this point to the north pole of this sphere. Okay, so जब हम ये line draw करेंगे and we'll also extend this line to infinity. Okay, so ये हमने एक पॉइंट लिया प्लेन पे, उसको हमने ज्वाइन किया नॉर्थ पोल ऑफ द स्फीयर. जब भी ज्वाइन करेगा इट वुड कट दिस स्फीयर एट सम पॉइंट. ठीक है, तो जो ये पॉइंट है स्फीयर की सरफेस के ऊपर जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है इस स्फीयर को, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन ऑन द रायमन स्फीयर. ठीक है, so there is a point on the complex plane and there is a point on the Riemann sphere, and this point on the Riemann sphere is the representation of this point on the this plane, complex plane. So if let's take any other point and again repeat the same process. We join this point to the north pole of the sphere, again it will cut some point. So if we take any point, it will and join that point to the north pole, and the line where it will cut the sphere will be unique. Like for every point there will be every point on the plane, on the complex plane, there will be a unique point on the Riemann sphere where this line will cut. Okay, so this is the way where by which we can represent a point on the Cartesian on the complex plane to the Riemann sphere. Okay, and also we can note that if we take a point within the sphere, like on the if we take a point on the plane but within the sphere, that is within the boundary of this equator, and join it to the north pole, it does not cuts to the northern hemisphere of the pole, but it rather cuts the sphere at the southern hemisphere. So you can intuitively like see that this complex plane is being folded to a sphere such that all the points of the plane which lies within this equator are in the southern hemisphere of the sphere, and all other points are on the northern hemisphere. Okay, and also one thing to note, that center point of this which the point on the plane which is directly beneath the north pole will join it like this, we'll extend it, and it will cut at the southern pole. Okay, so this point is cutting at the southern pole, and we'll take this point as origin, and so on the Riemann sphere this origin of the complex plane is represented on the south pole of the Riemann sphere. Okay, so if we see this Riemann sphere, the south pole is 0, and this equator, let's take the radius of the Riemann sphere for simplicity 1, and this equator like this which we made, this will be 1, it will be -1, and this would be iota, this would be minus iota. Okay, right? And if we see if we let us take a very far point in the plane and then join this line to the north pole. Okay, so the further the point on the plane is, the closer it will cut on the sphere to the north pole. ठीक है, जितना दूर एक पॉइंट प्लेन पे है उतना पास वो कट करेगा स्फीयर को टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, सो इफ वी कैन ऑल्सो इंट्यूटिवली सी दैट जो एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है ऑन दिस प्लेन विल कट एट नॉर्थ पोल. ठीक है, सो बेसिकली नॉर्थ पोल पे Riemann sphere का जो नॉर्थ पोल है दैट इज नॉट डिफाइंड. ऑल अदर points on this Riemann sphere are well defined, but the north pole is not defined because there is no point at finite distance from the origin on this plane which can be represented to the northern pole of Riemann sphere. So this is the Riemann sphere or stereographic projection.